नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आईपीओ कॉर्नर में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हमारे साथ जुड़े हैं यात्रा ऑनलाइन लिमिट्स के सीएफओ मिस्टर रोहन मित्तल। कंपनी का आईपीओ आ रहा है, उस पूरे आईपीओ पर बात करते हैं विस्तार से। रोहन सर, हाय, स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग अस। थैंक यू जी। ऑपरेशन साहब, सर ये बताएं कि ये जो आईपीओ आ रहा है, मैं देख रहा था कि इसमें प्राइसिंग को लेकर कुछ बातें हो रही हैं, उसको थोड़ा क्लैरिफाई करें कि एक स्टीप डिस्काउंट पर ये आईपीओ आपने दिया। 230 की रेंज में आपका शायद कुछ प्लेसमेंट हुआ था और अभी वहां से आप एक अच्छे सिग्निफिकेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, सर कारण? The two events are not correlated actually. From time to time, our promoter entity has put in money when required, and all those transactions have been routed as rights issue. It's only this time that the last rights issue which happened, which incidentally happened after the DRHP filing, that get happened and it got tagged as a pre-IPO placement. Since the money is all inbound money against these rights issues, the shares that get allotted to the promoter entities, they are subject to different valuation guidelines, right? And there we have to adhere to RBI FMR guidelines to make sure that we are fully compliant. तो उसका बहुत डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है वर्सेस दिस. दैट प्राइस एट विच इट वाज अलॉटेड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. सेकंड, विवेक जी, अगर ऑन अ स्लाइटली डिफरेंट नोट, अगर प्रोमोटर को 142 रुपए पे इश्यू किया होता प्रोमोटर एंटिटी को और मार्केट में 236 पे बेचते, तो आई कुड हैव स्टिल अंडरस्टूड concerns. But in reality, I think this only reflects the strong corporate governance standards that the company espouses by virtue of having a very, very strong independent board, right? We are not looking at it as steep discount. We believe the transactions are happening at a fair market valuation. Consider the fact that we are actually getting listed at a premium to the US price because we are already listed on Nasdaq. I'm sure you would have seen that. So there are multiple ways to look at it, basically. चलिए सर, बिल्कुल पॉइंट टेकन। सर ये बताएं कि कंपनी यूएस में भी लिस्टेड है और ये एक अच्छी बात भी है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होते हैं, जब आप दो दुनिया के बड़े एक्सचेंजेस में लिस्टेड होते हैं तो आपके एक इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बनता है, तो ये एक अच्छी चीज है। सर कंपनी की जर्नी के बारे में बताएं कि कंपनी ने किस तरह से अपने बिजनेस की शुरुआत की और अभी आप कहां तक पहुंच चुके हैं और आगे की किस तरह से आप उम्मीदें लगाते हैं या किस तरह से आप अपना प्लान कर रहे हैं बिजनेस को? Sure. So the company was founded by Dhruv and Manish. Dhruv and Manish were working together at a travel company called eBookers, UK में, लंदन में. And तो वहाँ ध्रुव और मनीष एक दूसरे को मिले and they came up with this idea कि इंडिया में उस टाइम पे पूरा ट्रैवल मार्केट ऑफलाइन था, राइट? आपको एक लोकल ट्रैवल एजेंट के पास जाके एक टिकट इशू करवाना पड़ता था या सम अदर मीन्स वर अवेलेबल. सो 2006 में दे केम अप विद दिस आइडिया कि लेट्स डिसरप्ट द इंडियन ट्रैवल मार्केट by converting it from offline to online, right? This was a pure play digital disruption in its truest sense. एंड बिटवीन 2006 से 2016 में पूरा ब्रांड यात्रा बनाया पेन्सटेकिंगली विद अ लॉट ऑफ पैशन एंड केयर. एंड 2016 में द कंपनी गॉट लिस्टेड इन यूएस. जो हमारे अर्ली इन्वेस्टर्स थे, VC investors who backed us during this 2006 to 2016 phase, they got almost an entire exit during that period, during our listing on Nasdaq. 2016 से हम लोग नैस्डैक पे हैं एंड 8 साल पहले हमने हमारा B2B वर्टिकल भी स्टार्ट किया था एंड टुडे वी आर द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ट्रैवल प्रोवाइडर इन द कंट्री. तो ये 17 साल में वी हैव बीन डूइंग B2B B2C बोथ. We all kinds of travel hospitality related products are availed through our website or through an offline model. We have the one of the largest hotel inventories, hotel direct contracts in India. Today, we have 29,000 plus travel agents across the length and breadth of the country who are empaneled with us. 800 से ज़्यादा बड़े corporate accounts हैं, right? These are the who's who of Indian corporate world, with tens and thousands of employees at their end. उनका travel हम लोग manage करते हैं.
and 98% customer retention ratio हम proudly claim करते हैं, demonstrate करते हैं. And all this has been built on the back of exceptionally sound technology, which allows us to scale in a much faster manner than would have been possible in an offline mode. जी सर, जिस तरह से आपने बताया कि आपके बहुत सारे होटल्स के साथ टाई अप्स हैं और दूसरे जो आपके राइवल्स हैं सर, उनके कंपैरिजन में आप कहाँ स्टैंड करते हैं? So we would have the one of the largest direct listing. 1 लाख के आसपास होटल listings हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे. This would be the largest or the second largest in the country today. And it is by far, it's a huge setup. It's मतलब टाइम लगा उसको ऑन ग्राउंड डेवलप करने में, एक एक होटल के साथ कॉन्ट्रैक्टिंग करने में. एज यू कैन इमेजिन, इट इज अ फीट ऑन ग्राउंड situation, right? So today we are able to derive a lot of benefit out of that. 22% of my ticketing sale on an annual basis happens for hotels and packages. That is on the back of these hotel contracts that we have actually built out over the last 17 years. Awesome, sir. Sir, what kind of margins you are enjoying in your business since last 2 years? Because I'm not trying to ask you कि आपके जो कोविड पीरियड में जो मार्जिन्स थे, बिकॉज कोविड पीरियड वाज एन एक्सेप्शनल टाइम, उसमें बहुत ज्यादा कुछ था नहीं. सर, पोस्ट कोविड किस तरह के मार्जिन्स आप एंजॉय कर रहे हैं? So there are two ways to look at this. One is the take rates that we earn when we sell tickets. Air में we are roughly earning about 7.7%, and hotel and packages में we are earning about 13.5, 14%. This is FY23 when there was no COVID wave. So these are the standard numbers that we would like to mention. At an adjusted EBITDA level, at an overall level, right? We are clocking around 11% adjusted EBITDA today, and there is room for further expansion on those numbers, and we have some clear strategies in mind around that. The IPO money, bulk of it, as you know, is primary infusion, 602 करोड़ रुपए. तो वो उन्हीं strategies में execute करने के लिए use करेंगे, so that we can further expand EBITDA in absolute terms as well as in terms of margin. सर, कंपनी की जो आईपीओ की वैल्यूएशन है, वो अगर हम कहें स्ट्रीट की साइड से तो एक फेयरली वैल्यू माना जा रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरह से आपने एक स्ट्रीट को लगता है सर कि आप एक डिस्काउंट दे रहे, ठीक है, आपने वो एक इंटीग्रल पार्ट था उस कैलकुलेशन का, वो आपने हमारे साथ शेयर किया. लेकिन ये बताएं कि सर आगे क्या कंपनी के प्लान्स हैं, कंपनी किस तरह से किस मोड में जाकर अपने को एक्सप्लोर करेगी, और किस तरह से कंपनी आगे अपने पोस्ट कोविड एरिया में, जहां पर कि ज्यादातर आपके सेगमेंट की कंपनीज बहुत एंजॉय कर रही है इस पीरियड को, किस तरह से एक्सप्लोर करने वाले हैं? तो देखिए, आईपीओ को लेके ही बात करते हैं. टू आंसर योर क्वेश्चन, 602 करोड़ का प्राइमरी फंड रेस हुआ है डिस्कस. उसमें से करीब 150 करोड़ रुपए एक्विजिशन के लिए ईयर मार्क है. इन द पास्ट 17 साल में हमने काफी एक्विजिशंस किए हैं मार्केट में. ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो ट्रैवल मार्केट कंसोलिडेशन के बेसिस पे आगे बढ़ी है. ऑल द टॉप प्लेयर्स टुडे have actually consolidated the market, right, over the last few decades or so. So our intent would remain the same. हमने सक्सेसफुल इंटीग्रेशंस किए हैं, आरओसी accretive acquisitions किए हैं in the past. So we will continue to look for the right value opportunities in that side of the market. The balance entire money is for organic growth, right? Organic growth में we would want to put in more money and to expand the share of wallet, to expand market share, and to expand the EBITDA percentage margins as well. राइट तो ये तीनों चीजों को हम एक साथ ही अटैक कर रहे हैं, सो दैट फाइनल रिजल्ट ईपीएस में शेयर होल्डर्स को रिफ्लेक्ट करे. दैट्स रियली व्हाट वी आर लुकिंग एट. सर, कंपनी के जो शेयर होल्डिंग के स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताएं. प्री आईपीओ प्रमोटर्स का कितना अभी हिस्सा है, और पोस्ट आईपीओ कंपनी में प्रमोटर्स का हिस्सा क्या होगा? So there are two investment holding companies. They together own 98.5% pre-IPO. Post-IPO, this number will come down to close to about 65%. Roughly. Okay.
तो सर ये जो मनी आ रही है ये किस तरह से यूटिलाइज होनी है? इसमें कुछ पार्ट प्रमोटर रखेंगे या कुछ पार्ट मतलब कंपनी में भी इन्फ्यूज होगा, किस तरह से करना है सर? हाँ जी, तो 775 करोड़ का आईपीओ है, 775. Out of that 775, 602 is money which will be only for the growth of the company. Yeah. यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड जो एंटिटी है जो आईपीओ के लिए जा रही है, उसी में आईपीओ पैसा और उसी की ग्रोथ के लिए यूज होगा. The balance 175 crores will go to the promoter entities, the investment companies which currently own 98.5%. बैलेंस 175 करोड़ रुपया के अगेंस्ट वो शेयर सेल कर रहे हैं, विच इज द ऑफर फॉर सेल ओएफएस कंपोनेंट. सर कौन कौन से बड़े इन्वेस्टर्स कंपनी के साथ अभी जुड़े हुए हैं जो इंस्टीट्यूशनल अमाउंट? So we have a few hedge funds who are backing us out of US. They are shareholders in the US entity. उनका इंडिया आईपीओ से डायरेक्टली कोई कंसर्न नहीं है. But since we are listed in Nasdaq, so there are a few strong hedge funds which actually back us over there. सर Nothing अभी to do with the India IPO. Nothing to do with the India IPO directly. okay, so there is no as such directly correlation with the Indian. Okay, perfect sir. So sir इंडियन कंपनीज में जिस तरह के हमने देखा कि आपका जो रेवेन्यू मॉडल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है. आपने जैसा कि बताया कि मार्जिन्स भी आपके जो पोस्ट कोविड है वो अच्छे हो रहे हैं. सर ये बताएं कि इस पूरे सेक्टर में जो आपकी एक ग्रोथ का पैरामीटर है वो कंज्यूमर स्पेंडिंग से जुड़ता है सीधे सीधे कि कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रही है, आपको फायदा हो रहा है. सर कंज्यूमर स्पेंडिंग का पैटर्न कितना स्ट्रॉन्ग चल रहा है इंडिया में और बाहर? क्योंकि हम देख रहे हैं अमेरिका में बीच बीच में रिसेशन की बात होती है, यूरोप में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है, रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल रिस्क होते हैं, तो थोड़ा सा कुछ लोग अपनी टूरिंग को पोस्टपोन करते हैं. कहीं कहीं पर सर आजकल ज्योग्राफिकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, लाइक कहीं पर अभी मोरक्को में अर्थक्वेक आया, तो कहीं पर कुछ हो रहा है. तो सर इन सब चीजों के चलते आपको बाहर ज्यादा ग्रोथ दिख रही है इंडिया में? देखिए, बाहर टाइम टाइम पे रिसेशन की खबर आती रहती है, हम भी पढ़ते हैं, मतलब वी ऑल आर सीइंग द सेम न्यूज, राइट. इंडिया में स्लो डाउन का मतलब है कि इंडिया जीडीपी 7% नहीं 6% से बढ़ेगा वो साल, राइट. लेकिन जब इंडिया जीडीपी 6% से भी बढ़ेगा तो दैट इज अ साइजेबल ग्रोथ फॉर अ कंट्री ऑफ आवर साइज एंड स्केल, राइट. And that reflects, Vivek ji, in the consumption pattern, which goes to the answer to your question. Structurally, there are changes which have happened, right? 25 से 35 साल का एज ग्रुप स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे, राइट, who are earning for the first time, कॉलेज से निकले हैं, फ्रेश न्यू जॉब्स एटसेट्रा, for them travel is not a discretionary spend. Travel is a part of their life, right? Now whether that is a weekend road trip, कोई staycation करना है या कहीं आसपास अब्रॉड घूम कर आना है, राइट, इट इज फर्मली अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ नाउ. इट इज नॉट कि कहीं फेयर कम होगा तो हम ट्रिप प्लान करेंगे. दैट्स नॉट हाउ पीपल आर लुकिंग एट इट. सेकंड, since we are doing both B2B and B2C and we are unique in that space, in that sense, 42% of our business on an as-is basis today is coming from B2B segment. Corporate business ज़्यादा प्राइसिंग इलास्टिक होता है. जो मीटिंग्स किसी ने अगर सेट कर ली हैं, कोई दिल्ली में कोई एम्प्लॉय है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, उसने बॉम्बे में अगर मीटिंग सेट करी है या अहमदाबाद में मीटिंग सेट करी है, तो दे आर गोइंग टू ट्रैवल, राइट. दे आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर द फेयर टू कम टू अ सर्टेन लेवल बिफोर दे स्टार्ट ट्रैवलिंग. हाइब्रिड वर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज फर्मली इन प्लेस नाउ, राइट. सो वी बिलीव दैट देर आर वन, demand is not showing any sign of coming down. You look at hotel occupancies, you look at hotel prices, you look at the DGCA passenger count which gets published on a monthly basis. आप कोई भी मेट्रिक उठा के देखेंगे, demand has simply exceeded all expectations, right? And we don't see that letting down at all. Yatra is uniquely poised to tap into this demand because we do corporate and retail both. We do corporate and leisure both, right? So we believe we are uniquely placed to access that demand which is coming. Recession and all is nothing to do with India, at least for the next decade probably. I'm not an economist,
but you all would know that better than me through your research teams. But we don't see that situation happen. परफेक्ट सर एंड वी होप कि आपका जो ये बिजनेस है उसमें ग्रोथ हो, क्योंकि ये पैटर्न दिखाता है कि इंडियंस एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, और आप भी एंजॉय करें, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आपको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका स्ट्रीट में स्वागत हो और शानदार रेस्पॉन्स आपके आईपीओ को मिले। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।